या हर चीज़ आइडियल डेफिनेटली नहीं होती। मैं बहुत शेमलेसली ये बात एडमिट करता हूँ कि अगर हमसफ़र हिट ना हुआ होता तो मुझे किसी ने मंटो नहीं बनाने देना था, राइट? उनको वो एक पॉपुलर अपील चाहिए थी। बट ऑल्सो एक बहुत ही फ्लिमजी सी, या वो जो उर्दू में मुहावरा होता है चढ़ता सूरज टाइप ट्रेड हमारा भी है, और बेशतर ट्रेड ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपका ड्रामा या फिल्म हिट होती है तो आप हिट हो जाते हैं, और फिर जब कुछ फ्लॉप होता है तो आपका ग्राफ नीचे आ जाता है। आई थिंक व्हाट अगेन यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इज कि आपकी सेंस ऑफ कमिटमेंट टू वट एवर यू बिलीव इन, योर आइडियोलॉजी डज नॉट नीड टू बी से द आइडियोलॉजी of the country or the ideology of the faith that you belong to. I mean, it's a very personal thing. It cannot be an external idea. जब आपकी वो नीयत ठीक होती है फिर आपको टैक्ट भी सीखना पड़ता है। समर ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे जब ऑनेस्टली पैसे बनाने होते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न इन टू मनी, आई वॉज सेंट टू अ गुड स्कूल, बट दैट वॉज ऑलवेज अ लग्जरी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, मैंने एमएससी किया साइकोलॉजी में। आई अगेन ऑल्सो डू नॉट फील कि ओ आपकी ज़िंदगी की हर कहानी कोई बहुत तारीखी या लेजेंडरी होती है। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन अ साइकिल, कॉलेज ऑन अ साइकिल, एंड आई एंजॉयड इट। आई डोंट थिंक इट वाज अ थिंग कि ओ इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, बट आई एंजॉयड डूइंग इट। देन आई सॉ मनी विच आई अर्नड माई सेल्फ, राइट? मैं टीवी के इश्तिहार में काम करता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे बना लेता हूँ। मैं टीवी का ड्रामा डायरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत महीनों में उतने पैसे भी नहीं बना पाता जो कि मेरा ख्याल है एक मेरी उम्र का बैंकर बना रहा होता है। फिर जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरा दिल चाहता है अच्छा मैं नियतन कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। जिंदगी तमाशा एंड कमली एंड जॉयलैंड आर मेड विद पैशन। I did not take money from anyone because I didn't want to. As Samar said, I did not want anyone to read Zindagi Tamasha's script because I thought, no, this is mine and I'll make it on my own terms. It comes with a cost. It comes with a cost. And that is where I feel your niyat comes into play. And niyat again is no big external philosophical idea. It is just what you believe in. If you're committed to what you want to do, then you do find ways. Sometimes you do not find ways. Like post these 3 films, now I'm struggling because अब मेरे पास पैसे जब आएंगे तब मैं अगली फिल्म बना सकूंगा। अगर नहीं बना सका, I will have to pause and I will choose what to do. Maybe I do have a bracket which I expand a little bit in terms of what fits into my ideology and what doesn't, you know. But having said that, your faith in your audience also needs to be firm. It cannot come from a place of greed. What everybody just said, Amardeep Saab also said, numbers, art is not quantifiable. It is not objective, it is subjective. And hence, sure, we all like big numbers of subscribers and followers and likes, etc. But at the end of the day, if you believe in something, it might not get you that kind of gratification instantly, but it will come. And having said that, I release Zindagi Tamasha on YouTube, and YouTube monetization, I'm sure a lot of young people understand. But just out of my own sense of loss about it, I put the onus on the audience also. I said, ये फिल्म मैंने बनाई थी, whatever, watch it. If you feel कि आप इसको सिनेमा में देखते जो कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी, तो please, this is a little detail to an account. This country where I would say 100 रुपया आपको कोई नहीं देगा, just people out of their goodness of heart, and that money for me is like unquantifiable. कोई किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डालता। इस मुल्क से कोई 32-35 लाख रुपए की टिकटें लोगों ने ऑनलाइन ले लिया मेरे फिल्म के। For me that's crores, that's just infinite millions, because now I know that tomorrow if I want to say, as they say, जुआ खेलना है अगर मुझे कि मुझे अपनी मर्जी की फिल्म बनानी है, तो मुझे पता है अच्छा 32 लाख की टिकटें तो मेरे कुछ चाहने वाले हैं जो ले लेंगे, और उसके लिए मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए होगा, उसके लिए मुझे कोई चैनल नहीं चाहिए होगा, उसके लिए मुझे किसी को अपना पिच डेक नहीं देना होगा. I will make something that's close to my heart. And now in this day and age, starting with your iPhone or your Android, whatever, you know, these cameras are crazy and insane to just softwares on your phone. If you have the niyat to tell a story, it couldn't have gotten easier than it is as now it is. Marvelous. Before I move on to I want
definitely would want in the last 3-4 minutes that the audience should ask you questions. But I want now कि next आपका क्या इरादा है, Mukhtar, Usman, starting from you. Any ideas that are your think अब मैं ये करना चाह रहा हूँ और ये करूँगा और tell us what is next in your menu card पे क्या है आपके? Like Sarmad said, Samar said, and Amardeep Saab said, it's a बड़ी मुश्किल काम है फिल्म बनाना, that is your baby, और उस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना और वो आइडिया किसी को भी किसी भी तरीके से ट्वीक ना करने देना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए फिर आपको पैसे नहीं मिलते. तो हमारा भी कुछ आइडिया ऐसे ही है कि ये शॉर्ट, आई मेड दिस शॉर्ट गुलाबो, और अब आई वांट टू मेक अ फीचर आउट ऑफ इट. तो प्रोड्यूसर से तो अभी किसी से बात नहीं की, अभी फिल्म लिखी जा रही है. जब लिखी जाएगी उसके बाद फिर देखेंगे अपनी जेब से पैसे डालेंगे या किस तरीके से करेंगे. भैया विश यू ऑल द बेस्ट. वाओ. अमरजीत सिंह जी ਹੁਣ ਕੀ करना जी? पता नहीं की करांगे उनते. देखो जी, इन्ना पता है कि आज तो 9 साल पहला पाकिस्तान च आया सीगा, कुछ नहीं पता की करना है. 2 किताबां बन गईयां, लोगों ने जानिया, ते उस तो बाद गुरु नानक डॉक्यूमेंट्री सीरीज 24 एपिसोड दी बन गई. बड़ी मुश्किलात आई ते ये 5 साल खत्म हो गए 5 लैंग्वेज विच. तुसी हुण क्वेश्चन पूछ रहे हो, महीना पहला अजे रिलीज़ कीती है ते कल असी जा रहे हैं मरी ते परसों असी जा रहे हैं चित्राल. अच्छा. मैनू इन्नी कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे बुजुर्गों की जमीन है, इत्थों कुछ आइडिया आएगा जरूर. वाह जी वाह. समर, बिकॉज बहुत टारगेटेड ऑडियंस आपकी है और आप बहुत एक डेफिनेट डायरेक्शन में हैं. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट मोर happening there that you would like to, tell us about. Any idea what the next thing would be? खालिद, जैसे अमरदीप ने कहा कि इंतज़ार है कि कोई ऐसा आइडिया हो जो कि दिल पे लगे, और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि मैं निकलूँ, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, तब वो आता है आइडिया. लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म है बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, वो 2 म्यूज़िक वीडियोस हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में. that will be lovely. और एक अभी कुछ अर्सा पहले किया था सर बुलंद, जो कि तायरा को पसंद है, तायरा अब्दुल्ला, और अमेजिंग एक्टिविस्ट. तो सर बुलंद का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कि अली हमज़ा ने गाया है, और लड़कियों को यूजुअली कहा जाता है कि तुमने ये किया तो हमारा सर झुक गया. वो गाने का नाम ही सर बुलंद है. वाह. और उसमें एक वालिद है जो कि बेटी को कह रहा है कि तुम्हारे सर उठाने से मेरा सर बुलंद हुआ. वाह वाह वाह. तो वो उर्दू में है, वो भी यूट्यूब पे है, और प्लीज़ वो भी एक ट्रिब्यूट है उस तरह के जितने भी वालिद हैं जो कि प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से. तो उन सब के लिए एक ट्रिब्यूट है. तो कुछ पता नहीं आगे क्या होता है. मार्वलस. सरमद, कमर्शियल फिल्म ही बनाओगे अब, या तुम्हारे अभी दिमाग में, मुझे पता है कहानी तो कोई है ज़रूर, तुमने तो उठते बैठते कहानियाँ बनाई हुई होती हैं, बट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, डू यू फील कि नाउ हैज़ कम द टाइम कि अब मैं ये वाला काम करूं, या यू विल लेट इट गो एंड लेट इट सिंक इन? खालिद, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना वो बाइनरी समझ नहीं आती. मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैंने 1980 के बॉलीवुड फॉर्मूला को सिर्फ फॉलो करके फिल्म बनानी है एंड दैट इज कंसिडर्ड कमर्शियल, आई डू फील इट्स अ डिसर्विस टू माय ऑडियंस मच प्रायर टू माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट. यू नो, कल कमली यहीं पे चली, अब
मैं कमली के बारे में ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ओह बड़ी आर्ट हाउस थी। मैंने कहा भाई लड़की डाल दी, लड़का डाल दिया, मोहब्बत करा दी, पानी में बह गए, गीले कपड़ों में पानी से बाहर आ गए, आतिफ असलम का गाना आ गया, रेशमा जी भी आ गई। अब खून तो मैं अपना कर नहीं सकता, ठीक, लेकिन जो एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं उस फियर में खुद ही ना कुड़ता रहूं और मरता रहूं कि जी मुझे सिर्फ फॉर्मूले का कैद होना है। मुझे फॉर्मूले से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे गाना भी पसंद है, मुझे नाच भी पसंद है, मुझे कॉमेडी भी पसंद है, मुझे ड्रामा भी पसंद है, बट समहाउ आई डोंट फील कि मैं वो वाली जो फॉर्मूले की फिल्में उनके लिए स्केल चाहिए। वो फिर आप मार्वल और यशराज कर रहे हैं, वो काम बहुत अच्छा, और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं वो तो नहीं कर सकता। आई माइट डू दैट व्हेन आई हैव द मनी टू डू इट, but I will just steal from two people right now to close this. One is Faiz Foundation was very gracious to give me rights to that ghazal by Faiz Saab to use in the new trailer of Zindagi Tamasha, and I feel it resonates with me. It says, एक तर्ज़े तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। तो मेरी अर्ज़े तमन्ना, मुझे पता है कि मैं, आपको नहीं लगता, थैंक यू, लेकिन मैं 44 साल का हो चुका हूँ। 40 के बाद बहुत ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपना काम कुछ हद तक समझ आना शुरू हुआ है। तो मैं दिल से करता हूँ, और जब जब दिल से करता हूँ मुझे ये यकीन ज़रूर होता है उसकी कहीं ना कहीं ऑडियंस मिल जाती है मुझे। तो एक तो मैं अर्ज़े तमन्ना नहीं छोड़ूंगा, दूसरा वालिद साहब, और मैं किसी प्रोविंशियलिज्म या रेसिज्म के उसमें नहीं कह रहा, मैं पंजाबी हूँ और मुझे अपने पंजाबी होने पे बहुत फ़ख्र है, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ पंजाबी है, मेरा अब्बा पंजाबी है। लेकिन अब्बा एक चीज़ कहते होते हैं, अब्बा मेरे कहते हैं कि फिल्म जेड़ा है ना, या ते मिल आला बनांदा है या दिल आला बनांदा है। तो आई डोंट हैव अ मिल बट आई डू हैव अ दिल, सो आई विल कीप मेकिंग फिल्म्स। अच्छा, लास्ट 7 मिनट्स कोई बच्चा हमारे इन मार्वलस फिल्म मेकर से कुछ पूछना चाहेगा? जी पूछिए प्लीज। माइक दो, माइक दो। हाँ दे दो, दे दो। अच्छा, अब तो तारुफ करा दो बेटा। Assalamu alaikum, my name is Masuma Zaveri and I'm actually an entrepreneur. जैसे बात हुई अभी सेलिंग की, तो मैंने अपना, आई एम नॉट मैरिड येट, लेकिन मैंने अपना वेडिंग सेट भेज दिया था जो मैंने मेरी अम्मी ने बना के रखा था। बट नाउ आई हैव लॉन्च माय ओन प्रोडक्शन हाउस, और उसमें ये कि मेरा काम जो है वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हब में रिकग्नाइज हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि थोड़ी रिकग्निशन कम होती है, प्लस क्या कंटेंट जो है, क्या ऑडियंस जो देखना चाहती है, क्या प्रोड्यूसर्स वो बनाते हैं या फिर हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी स्टोरीज से? दैट इज माय क्वेश्चन। किससे पूछा आपने सवाल? ये नाम लेके पूछिए ना। anyone can answer, because there are beautiful people, there are very multi talented people, there can answer anyone. आप बताएंगे तो आप लोग फिल्म मेकर्स हैं, हाँ बता दें। समर, थैंक यू। मैं तो जी जब बनाती हूँ मेरे बिल्कुल जहन में एक तो सोच होती है कि जो बहुत सिंप्लीफाइड बाइनरीज होती हैं कि जो मर्द हैं वो इसी तरह दिखाए जाते हैं या औरतें मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस इस तरह नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग, मेरी ऑडियंस उस चीज़ को समझें। तो ऑडियंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर वही बात है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस और वेयर आई कम फ्रॉम वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी बेटा आओ, बताओ नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिर शफी सईद है। आई हैड अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर खूसट। डू यू थिंक द एडेज all publicity is good publicity applied to any of your films? Pertinent enough, because I think when whatever happened to Zindagi Tamasha, I think within the fraternity also everybody thought it was a great publicity stunt. लेकिन उसका जवाब मैं वही देता हूँ हमेशा कि जरा चक के ते विखो एक बारी मजा ना आए तो मैनू दस। No, I don't believe in it. To be honest, in this day and age, it's very easy to get famous, but it won't last for long, right? It could take you a meme, it could take you something really ridiculous. Not discounting it, why not? People should have an appetite for bizarre, ridiculous, bite-sized, weird things like,
I don't know, just like a wow and, party ore. We need it. It's fine. And we all enjoy it. We are all guilty as charged, right? So let us not be, mightier than or holier than thou. We all enjoy it. But I do feel that some constructs need to be separated as what you aspire to do. And there are things which are distractions. And let's not be, say, focused on distractions because they have to come as flukes. Today, if you decide कि मुझे एक meme बनाना है कि मैं viral हो जाऊँ, you won't be able to do it. It will have to come organically. So even there is a stroke of genius there, right? So no, I don't believe all publicity is good publicity. Some of it can be damaging. अस्सलाम वालेकुम ऊंचा बोलो। अस्सलाम वालेकुम इज़ा हेयर मेरा सवाल सबसे है जिस तरह अभी रिसेंट टाइम्स में पीछे हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक हुई थी और एक्टर स्ट्राइक हो रही थी तो आपने एक नज़र आया था कि सब काफ़ी लाइक यूनाइटेड हैं तो पाकिस्तान की अगर मैं रेफरेंस से पूछूं तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि जो सेंसरशिप बोर्ड है वो चीज़ों को इस तरह से बंद कर रहे होते हैं काम को रिकग्नाइज़ किया नहीं जा रहा होता इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जा रहा होता है तो क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप आपस में एक दूसरे पर रिलाई कर सकते हैं और फिर अपने काम को उनके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं ऑडियंसेस तक पहुँचा सकते हैं बिकॉज डिफरेंट तरीके के डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है और कितना सपोर्ट मिलता है आपको उन लोगों से Usman? My answer is no. I agree with Sarmad bhai. Other than the punchline, it was meant to be a mic drop. It did not garner that kind of applause. You see, fraternities and industries are also very complicated ideas, It cannot happen over time. I will only quote an example that when I did my college, there was no concept of film being taught anywhere or television even, So as a society, we did not own this art form until just 2 decades ago, just teaching film and cinema and theater or television is very nascent. So that ways, you have to own things academically. You have to own things in a way that, there are institutions which will think and do stuff on some kind of a design. So it's too new. No, we do not have fraternity as such. We do not have industry rules and regulations. We do not have guilds, but things are happening. So the seeds are sown, and I would not want to be a pessimist, but at the moment, no.